to be at home, completely free, liberated, and merging my thoughts, my intellect, becoming like a seed. A big tree is merged in the seed. So I also merge everything, anything what mind and intellect has taken from my outside or from inside. Let us merge everything. Just become a point, a seed, merging all the expansion, all the details, and I move, go beyond body, there's elements, and go all five elements. And I go as I go beyond five elements, there is the sixth element of light. As I go beyond sun, moon, and stars, there is this realm of light. As I enter my sweet home of silence, as a sparkling star, in this incorporeal world, my sweet home, where I will go to rest after completing art and drama, sit in presence of Baba, Baba also is seed of this unlimited big tree. All the knowledge, all the love is also merged in Baba at this time. I sit very near to Baba. There is experience of silence, of freedom. Very loveful. There is deep silence.
with the experience of deep peace also. Soul is able to experience total rest and completely free from the experiences of physical world, free from the thoughts, soul become completely absorbed and receive from Baba Baba's love, the rays of Baba's qualities and powers, I am at my sweet home with sweet Baba. In my this eternal self, I look at Baba, take Drishti from Baba, and be with Baba. संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते, कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आता, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आता, साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते। आजकल करोड़पति भी साधारण साधारण बच्चों में भावना और बाप को क्या चाहिए? भावना चाहिए या देवपान वाले चाहिए? जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन पान होगा। तो आपको भावना का फल देना है। तो भावना किसमें होती है? साधारण आत्माओं में, नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय। तो आप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे
संगम युग में साधारण बनना, ये भी भाग्य की निशानी। अच्छा, Om Shanti. Now do service with your elevated state of the mind and your subtle attitude. Create vibrations and atmosphere through spiritual attitude. Just as the atmosphere of Madhuban is imprinted on each one's heart, in the same way, each one of you must create such vibrations and such an atmosphere through your spiritual attitude. However, your attitude can only be spiritual and powerful when you do not have any vibrations of a wrong attitude towards anyone. The attitude of your mind has to be clean. If your attitude is negative or you have rubbish in your mind, you will not be able to serve with a pure attitude. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar, and today is the first day of month of May. So new series, new topic. So let's start. So the topic is now do service with your elevated state of the mind and your subtle attitude. So today's topic, create vibrations and atmosphere through spiritual attitude. So now we will listen to Mohini Didi, and then we have something new today for all of us. So please stay back with us. So let's listen to Didi. Om Shanti, everyone. Is everyone okay? Doing well? Yes? Feeling well after doing your homework, right? This month we will be thinking and doing and practically see the benefit of having pure and powerful vibrations. But even before that, Baba said Baba comes in an ordinary body. I think if he comes in a king's body or any saint or great man, people will be looking at the body, right? Their all attention will be on the status of the person. Even we know that Brahma Baba, we say ordinary, but he is, I think, extraordinary. His values in his life, his success in his business, his love for the family,
There are unlimited qualities. His charitable heart, his generosity, all that makes him extraordinary. And Baba said those who are ordinary have lot of bhavna. And what God likes is bhavna. So I think that each one of us, whatever happens, we have to maintain our bhavna. There are different saints in drama, and everyone has different part to play. But I don't have to do anything with that. But I have to maintain my bhavna. Some situation happened recently. So someone said, my bhavna is losing. Why bhavna is losing? We have to maintain our bhavna, because that's where you will have all the attainments. Vibration has capacity to create and to sustain. I know that, of course, there are many projects where they are working from vibrations. But I remember that we were taught that even when you are watering your plants, do it with love. And they play some songs, beautiful music, even when they are feeding children. What it does, because when Baba is saying that pure and clean, pure, clean, powerful. Now we found, and it happens, that some people are not doing things which are right, not in the favor of yagya, but it is more kind of creating wrong image for yagya, the family or organization. What should I think about them? If I say yes, they are like that. And of course, we know that there are many, many who from time to time, whether it is lack of power or temptation or whatever reasons, they do wrong things. What should I think about them? I'm talking of something at present practical. And think about what would you do? Baba has come to make impure ones into pure ones. If Baba had this thought for all of us, that we have done so many sins for so many births and impure and vicious, right? Baba would not be able to make us pure. Even whatever we did and whatever we were, and sometimes we are, Baba always looks at us as pure souls, loveful souls, peaceful souls. And Baba's those vibrations, Baba's that drishti brings transformation in us. So if we have to follow Father, then whatever anyone is doing, but my thoughts should be elevated. And Baba is using the word, no garbage, nothing which is not clean. That means we cannot allow
the thoughts of that person who is doing wrong, that we think about that person, not a good person. He shouldn't be doing that. And you have to take action even. But our attitude, our vibrations shouldn't change. It's a real practice. When I say it's not just saying, it's a real practice to look at a person, have the thoughts and the vibrations for that person very elevated. Because ultimately, what is our service? Is to create an atmosphere which can sustain others, transform others, and make them feel also that I need to also have elevated thoughts. I think each one of you might have to think in a way, am I impractical? Have constantly elevated thoughts to create a spiritual atmosphere. I think at present, our effort should be that I can say, yes, whatever the part of that soul is, but I have elevated thoughts for that soul. You know, Baba had said recently, look into the mirror and then you check that are my all thoughts elevated for everyone. Some say, what is wrong to see a person what that person is? It's not what I am thinking because it's a reality. Yeah, that your logic says that way. But then, what are Baba's teachings? What is the purpose of our life? What is our aim? That everyone in the world, everyone within the family, whether it is divine family or Lokik, everyone should become elevated. If that is the thought, then we can't have other kind of thoughts. Our Dadi Janki is very known for having good wishes for everyone. They used to say that she's the last person who will give up on anyone. And that is why everyone had a lot of love and respect. But for us, we look at the way the person is, what that person is doing, what person is. And all those are really wasteful thoughts. Now actually think about in my thought, that means in your thought, your mind, if there are negative thoughts, even that person is negative, but negative thoughts in your mind, that will be negativity within you, right? So it's not that by taking care of things or wherever it's necessary to have corrections, but how not to allow the thoughts of that person or negativity of any kind get into my mind. So that's the attention we have to do it. After listening to this vibration thing, some people had been calling me and say,
How is this practical? How it is possible? You seeing someone doing wrong. So I said, but what do we want? To punish that person or reform that person? We want that person to change and stop doing what is wrong. But how power will come? When I have elevated thoughts for that soul and create vibrations in the atmosphere, spiritual and powerful, for that soul to have realization. Today I was thinking that there are many, many souls, high position, but cooperative souls of Yagya. And one recently in government, a good position, was sharing that how when I was young, Dadi Prakashmani was there, and I have so much love for Yagya that I want to serve Yagya in my capacity now. There was other one like that, very high position. He said, when I was 18, I went with my parents. So I was thinking Dadi Prakashmani is still serving. Because these young people, they're not in knowledge, they are in high position, but they have so much love for Yagya. They cannot see any dispute, they cannot see any conflict, they cannot see anything wrong happening in Yagya. So they come and they help professionally. So why until now Dadi Prakashmani is serving? Because of purity, because of her elevated thoughts for each one. So same way, we have to serve. No water, we make nectar, right? But same water, some can put poison in that and make it poisonous, right? But ocean doesn't stop giving water. Sun rays, they continue. They do what they have to do. They don't give according to what a person does. Many examples. So whether we are walking on the road, we are looking at the trees, observing all the scenes of drama. But what is most important? To have elevated thoughts that increases the capacity to create the vibrations which everything becomes very spiritual and powerful. Our homework is not just for me to become perfect and complete, but for the transformation of the world also, to serve the world. And in that serving, of course, there are souls, then there is nature. Everywhere, anywhere. If you keep somewhere in the corner very beautiful flowers, jasmine and roses, it doesn't stop giving fragrance. By thinking this person is not good, I'm not going to give fragrance. They are fragrant, so fragrance spreads all the time. So each one of us, we have to be what we have to. We cannot change and say,
oh, I will have good vibrations for this one, but I can't have for this one. You know, you have fragrance and it spreads and everyone can smell it. You know? I am kind of underlining it because this is something all I think sometimes most of the time they find it practically, they're not able to do it. Even when they have to smile. Those who are smiling always, they are smiling. But there are some, they smile to some, won't smile to others. Because of whatever they have, maybe from the past, some hurt, some difficulty in relationships. No. So to have this consistent, very naturally, in that elevated stage, where one spreads all loveful vibrations. So we will do our homework tomorrow and observe ourselves. Observe and listen to your thoughts. That am I consistent, creating spiritual and powerful vibrations for all. Om Shanti. Om Shanti Vikti Parivar. So today is the first day of the month. So we thought let's bring something new today. And in the past, we had been listening to our ancestors' experiences. But today, we would like to bring their wisdom as well. So many dadis and dadas, they had given beautiful classes and whatever material we have. So from there, we would like to bring some clips to Avakti Parivar. So today we'll start our Avakti journey in a different way. So welcome to Avakti journey, sharing from ancestors. Today's day 1. Let's listen. साइलेंस पावर विषय बहुत अच्छी हैं, इसके हम सब अनुभवी होते जा रहे हैं, क्योंकि सब शक्तियों में ये शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और इसी शक्ति में और सब शक्तियां समा जाती हैं। इसके सिवाय साइलेंस पावर इकट्ठी हो नहीं सकती। साइलेंस का फाउंडेशन ज्ञान भी है, पवित्रता भी है, सभी प्रकार की धारणाएं भी हैं। जितने भी दैवी गुण हैं उन सब की धारणा भी इसके अंदर समाई हुई है। तो सभी बातों के आधार पर आत्मा में साइलेंस पावर जमा होती है। जैसे आप सब अनुभवी हैं कि हम
भाई बहने जब परिवार में चलते हैं, समाज में चलते हैं, तो कई प्रकार की व्यर्थ बातें हमारे मन के अंदर घुस जाती हैं। कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, संपर्क में, संग में बैठेंगे तो भी कुछ कुछ बातें हमारे अंदर घुस जाएंगी। तो वो जो बातें अंदर घुस जाती हैं तो हमारी सब शक्तियों को अंदर खत्म कर देती हैं। जो भी हमारे अंदर शक्तियां होती है ना, वो बुरी बातें देखने से, सुनने से, ऐसे स्थान पर जाने से, ऐसे विचारों से हमारी वो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और अंदर की खुशी गुम हो जाती है। और ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन में है परंतु जीवन खोखली है, अंदर कुछ भी रस नहीं है, निरस है। परंतु जब बाबा का ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है स्वयं की, अपने पिता की समझ, अपने घर की समझ मिलती है और ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती है, भविष्य स्पष्ट हो जाता है और वर्तमान भी स्पष्ट हो जाता है और अच्छे और बुरे कर्मों की भी पहचान आ जाती है, माया और प्रभु की भी पहचान आ जाती है। तब हम जो भी कर्म करते हैं वो सोच समझ के काम करते हैं, राइट के तरफ जाते हैं, की तरफ छोड़ देते हैं। तो जितना जितना हम रॉन्ग बातों को छोड़ देते हैं, बुरी बातों को छोड़ देते हैं और अच्छी बातों में चलना सीख जाते हैं, तो अच्छी बातें दिल में शक्ति पैदा करते हैं, दिल में खुशी होती है, दिल में पवित्रता आती है, दिव्य गुणों की धारणा आती है। तो जैसे जैसे धारणा आती जाती है वैसे वैसे ये हमारी साइलेंस की शक्ति बढ़ती जाती है। साइलेंस की शक्ति अपने आप में अकेली नहीं है, वो रिजल्ट है, कई प्रकार के धारणाओं की रिजल्ट है साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की पावर। तो ये कैसे वृद्धि को प्राप्त करते हैं? जैसे आप देखो भोजन पान करते हैं तो भोजन में रोटी, चपाती, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ होता है, फिर फल फ्रूट भी खाते हैं और भी दूध, दही, मक्खन ये भी खाते हैं। तो जैसे जैसे हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है तो हम जो भी खाना खाते हैं वो हजम हो जाता है। जिसका भोजन हजम हो जाता है उसके अंदर में फिर ये शक्ति बढ़ जाती है, जिस्मानी शक्ति, ब्लड भी बढ़ जाता है। ब्लड के कारण हम अपने शरीर में शक्ति को महसूस करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हमको महसूस होता है मेरे शरीर में कोई ताकत है। कई बार हम अच्छी अच्छी चीजें भी खाते हैं परंतु ऐसा लगता है पता नहीं क्या होता है, क्या मेरे अंदर है जो मैं चल नहीं सकती हूँ, भोजन नहीं खा सकती हूँ। अच्छा भोजन रखा है, दिल करता है मैं खाऊं परंतु खा नहीं सकती हूँ। तो कारण को निकालती है, क्या कारण है? हजम करने की शक्ति कमजोर है, इसलिए अच्छा खाना खाने पर भी हमारी शक्ति नहीं बढ़ती है। परंतु कम खाएं, धीरे धीरे खाएं, प्रेम से खाएं और खास करके बाबा की याद में खाएं, भगवान की याद में मनुष्य खाते हैं तो वो भोजन इतना बढ़िया काम करता है जो शरीर को भी रुष्ट पुष्ट बना लेता है, मन भी रुष्ट और शरीर भी रुष्ट। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी,
ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें। Om Shanti Avyakti Parivar. So we have double fortune that today we have Raju Bhai with us here. We had opportunities in Peace Village as well, but today he is passing by here and we got this opportunity to have him with us in Avyakti Parivar. He is on his way for next trip, so would like to hear from him. So I would just hand over to Raju Bhai. We would like to hear from you. Om Shanti. ओम शांति। सभी पूरे अव्यक्ति परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी सुंदर पालना आप सभी बाबा के बच्चों को मिल रही है। हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी बहुत सुंदर ढंग से बाबा के महावाक्यों को अपने अनुभव के आधार से आपके सामने स्पष्ट करते हैं। 2-3 साल से ये अव्यक्ति परिवार की पालना लगातार आप सबको मिल रही है। बहुत बहुत भाग्यशाली हो जो नए नए रत्न आप सबको मिलते रहते हैं। मुझे भी ये बहुत खुशी है कि सन्मुख में देखने का, सुनने का और आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं करीब 20 दिन से अमेरिका के टूर पर हूँ। डैलास और न्यूयॉर्क के संबंध में जितने सेवा केंद्र हैं सभी पर जाना हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि दूर देश में रहते हुए बाबा के बच्चों में कितनी लगन है, कितना बाबा से, यज्ञ से और परिवार से प्यार है। पढ़ाई से भी प्यार है, लेकिन आजकल ऑनलाइन सुनने की बहुत अच्छी आदत बन गई है। वैसे तो साइंस के साधन बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, लेकिन जो संगठन का बल है, जो सेवा केंद्र का वातावरण है, हमारी पवित्र बहनों की दृष्टि है, पालना है, उनके हाथों से बनाई हुई टोली ब्रह्मा भोजन खाने को मिलता है। ऑनलाइन सुनने वालों को इस बातों से वंचित रहना होता है। फिर भी आप सब बहुत लकी हैं, भाग्यवान हैं, जो घर बैठे कहते घर बैठे भगवान मिल गया, घर बैठे गंगा आपके घर में आ गई, तो उसका लाभ तो ले रहे हैं। और जैसा कि होमवर्क मधुबन से आता है, अभी एक मास हम सब ने ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण फरिश्ता बनने की बहुत सुंदर पॉइंट सुनी है। और इस मास हम सभी अपनी वृत्तियों द्वारा वाइब्रेशन और वायुमंडल को चेंज करने की, मनसा सेवा करने की, सकाश देने की पूरी 31 पॉइंट सुनेंगे। दीदी रोज उस पर स्पष्टीकरण देती रहेंगी। वर्तमान समय की जो विशेष आवश्यकता है, बहुत समय से बाबा कह रहे हैं बच्चे, समय आएगा जो ये वाचा सेवा समाप्त हो जाएगी।
आपकी पावरफुल मनसा, आपकी शक्तिशाली वृत्ति इस कलयुगी वातावरण को परिवर्तन करने में मदद करेगी। सिर्फ वर्तमान समय आवश्यकता ये है कि हम अपनी वृत्तियों को बहुत शुद्ध, शुभ भावनाओं से संपन्न बनाएं। शुभ चिंतन, शुभ भावनाएं हमारी वृत्तियों को शक्तिशाली बनाती हैं। सबसे पहले हमें बाबा की शक्तियों को कैच करना है। जैसे सूर्य की किरणों को एक स्वच्छ कांच पर लेकर के अगर वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो कई प्रकार का परिवर्तन कर देती हैं। ऐसे ही बाबा की ज्ञान सूर्य की किरणें मेरी मस्तक पर, मेरी वृत्ति पर, मेरे मन रूपी दर्पण पर अगर पड़ें तो वो पवित्र किरणें चारों तरफ एक पवित्र वायुमंडल क्रिएट करेंगी, प्रकृति को पावन बनाएंगी, मानव आत्माओं को पावन बनाएंगी। इसलिए हम सभी ब्रह्मावत्स बाबा के बच्चों को वर्तमान समय अनुसार अपनी वृत्तियों को बड़ा शुद्ध, सकारात्मक बनाने की जरूरत है। और वृत्तियां शुद्ध बनती हैं, बाबा ने इसकी भी विधियां बताई हैं। व्रत लेने से जितना हम दृढ़ता से व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, उतना ये वृत्तियां हमारी एकाग्र होती हैं, शुद्ध होती हैं, पवित्र बनती हैं। और वो वृत्तियां जब बाबा से कनेक्ट हो जाती हैं तो वृत्तियों से वाइब्रेशंस फैलते हैं। तो इस मास हम सभी इसका अभ्यास करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे। वृत्तियां कैसे बनती हैं वो भी आप सब जानते हो, बाबा ने बहुत बार सुनाया है। जो संकल्प हम बार बार वृत्ताकार रूप में रिवाइज करते रहते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, जब कोई बात बार बार संकल्पों में चलती रहती है तो हमारी वृत्ति बन जाती है, वो दृष्टिकोण हमारा ऐसा बन जाता है। इसलिए पहले हम सबको एक व्रत लेना है, जो बातें मेरे काम की नहीं है, जिसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं और हमें कोई लाभ भी नहीं है, उन वृत्तियों, उन संकल्पों में हमें नहीं रहना है। अपने संकल्प जितने हम पवित्र, शुद्ध बनाते हैं, शुद्ध संकल्पों के लिए बाबा ने हमें खजाना दिया है। मुरली, वरदान, स्लोगन हम सब पढ़ते हैं, और अगर इस पर हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि दिव्य बनती जाती है, वृत्तियां शुद्ध होती जाती हैं। और उन शुद्ध वृत्तियों से हम अच्छा, जहाँ हम रहते हैं वातावरण वास्तव में बोलचाल से बनता है, लेकिन वृत्तियों से वाइब्रेशंस बनते हैं। तो अगर हमारा बोलचाल और हमारी शुद्ध संकल्प से वृत्तियां ठीक हैं तो वाइब्रेशन भी अच्छा बनेगा, वायुमंडल भी अच्छा बनेगा, वातावरण भी अच्छा रहेगा, और उसका प्रभाव वर्तमान समय की तमोगुणी प्रकृति पर, आत्माओं पर, दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं पर अवश्य पड़ता है। और महसूस करेंगे कहीं से शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझे कोई सहायता दे रहा है, मुझे कोई मदद कर रहा है। तो हम सभी बाबा के बच्चे विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा के मददगार हैं। और बाबा को अभी वर्तमान समय इतने बड़े विश्व परिवर्तन के लिए अपने ऐसे मददगार बच्चों की आवश्यकता है, जो बहुत पवित्र, शुद्ध संकल्पों में रहें, अच्छी वृत्तियों में, चंचल वृत्तियों को एकाग्र करके बाबा की प्यार में खोए हुए रहें। तो वृत्तियों से वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनेगा, और ये विश्व सहज ही कलयुग से सत्ययुग में परिवर्तन होगा। तो ऐसी शुभभावना है। और बहुत अच्छा लगा मुझे, दीदी ने बहुत अच्छे चांस दिए, और विशेष करके पीस विलेज में करीब 180 भाई बहनों की जो 3 दिन की रिट्रीट हुई, उसमें अनुभवों की लेन देन करने का
एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर मुरली के विषय में हमारी गायत्री दीदी ने करवाया, लिया कला दीदी ने। तो ऐसे लगा कि इतने सब ब्राह्मण आत्माओं को मेरे मधुबन आने से अगर कोई फायदा हुआ तो मुझे भी खुशी हुई है, और इतने बड़े परिवार को मिलकर के आप सबको देख करके कितना उमंग है, कितना उत्साह है। दूर बैठे पता नहीं चलता, लेकिन आज हजारों भाई बहनें ऑनलाइन व्यक्ति परिवार से जुड़कर फायदा ले रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। ओम शांति। Om Shanti. Thank you so much, Paisa. And so let's wave one hand to say thank you to our real angel who has come from Madhuban, so has brought the fragrance of Madhuban, right? So thank you once again. Om Shanti. Now do service with your elevated state of the mind and your subtle attitude. Create vibrations and atmosphere through spiritual attitude. Just as the atmosphere of Madhuban is imprinted on each one's heart, in the same way, each one of you must create such vibrations and such an atmosphere through your spiritual attitude. However, your attitude can only be spiritual and powerful when you do not have any vibrations of a wrong attitude towards anyone. The attitude of your mind has to be clean. If your attitude is negative, or you have rubbish in your mind, you will not be able to serve with a pure attitude. Om Shanti. Om Shanti, Avakti Parivar. So we got many lotteries. So now let's move forward, and tomorrow is Tuesday. So our schedule will continue from Amritwela, and tomorrow is Avik Muli revision in English from 5 to 6, and then followed by meditation, Hindi series, meditation commentary, English series, and Avik journey. So now let's start Avik journey. Welcome to Avik journey. Avik Murlis from 1969, inspiring us to change from Brahmin to angel. Om Shanti, Avyakt Murli of 29th June 1970. The unlimited form of surrender. Brahma Baba became perfect to the extent that he surrendered. However, what is the unlimited form of surrender? The more you imbibe this in an unlimited way, to that extent you will make your intellect unlimited and become one with the right to the world. What was that unlimited surrender? There are 4 aspects in that too. Firstly, your every thought should be surrendered. Secondly, every second should be surrendered. That is, your time should be surrendered. Thirdly, your actions should be surrendered. And fourthly, your relationships and wealth should also be surrendered. There also has to be the surrender of all relationships.
Lockic relations are, of course, included in that anyway. However, the relationship between the body and the soul should also be surrendered. Have you surrendered to this extent? Perishable wealth is not a big thing, but imperishable wealth, the attainment of happiness, peace, purity, love, and bliss as a birthright, was surrendered in the service of other souls. He felt that peace for himself lay in the peace of the children. So, in giving peace to other souls, he considered it to be peace for him. This is what it means to surrender your worldly wealth together with your godly wealth while staying in the stage of a detached observer. So there is such a vast, unlimited significance in the word surrender. Do you understand? Those who imbibe it to such an unlimited extent become images of success and images of perfection. So do not see the word surrender with the ordinary meaning. It is easy to surrender worldly things, but to surrender godly attainments means to be a great donor and to have pure thoughts for others happens number-wise according to one's capacity and worthiness. Those who surrender everything to this extent are said to be those who are totally surrendered. Have you become such images of perfection, such images of surrender? All consciousness of I should be totally merged. When something is merged in something else, it becomes the same. To merge means to become the same. So the more you merge the consciousness of I, the more you will become an image of equality. When you serve innumerable souls, what is the aim you keep? To make them similar to ourselves. You do not just have to make others equal to yourselves, but equal to the Father. If you make them equal to yourselves, the weaknesses you have will also become their weaknesses. Therefore, if you wish to become perfect, you must not make others just equal to yourselves, but equal to the Father. Just as Baba makes you more elevated than himself, in the same way, if you make others more elevated than yourselves, it means you have followed the Father. If you have just kept the aim of making others equal to yourselves, they will have many weaknesses remaining because the aim you kept was just to that extent. This is why you must always keep the aim of perfection. You have to keep the aim of the perfect image that has been revealed. You cannot keep an aim of that which is still incognito, which is still not revealed. As your aim, so your objective. Therefore, if you keep an elevated aim, you will have elevated attainment. Now, your third eye should always be focused on the target in a very stable way.
When people have a stage where they are totally lost in love, their eyes become very still. Acha, to be continued tomorrow. Om Shanti. So now we'll remember Baba and take Drishti and Om Shanti. मौन की भाषा जो समझे, मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। आवाज की दुनिया से परे दो पर दूर जो जाए, बाहर के जग से रह कर न्यारा अद्भुत विश्राम पाए। असीम आनंद के सागर में वो सदा लहराता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। मन सदा मुस्काए उसका, तन से रहे जो दूर। सर्व शक्तियों के बल से रहे वो सदा भरपूर। अपने अंतर सद्गुणों की खान वो भरता जाता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे।
ही शिव से मन के सब ही तार हो, मन ही मन में भर जाती है अखुट शक्ति अपार। अनंत प्यार की अनुभूति मन का मौन कराता है, मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख वो पाता है। ओम शांति, ओम शांति। पूरे अव्यक्ति परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti Om Bhai. Shanti Raju Bhai ji, thank you so much. Om Ji, Shanti. thank you so Raju much. Bhai. Shanti. Shanti brother Raju. Shanti Didi. Good Mohini Didi. Shanti Good night. Raju Bhai. Bye. Shanti Didi, Om Shanti Raju Bhai. Gracias, gracias. Om राजू Shanti. भाई जी ओम शांति। मधुबन में याद देना हमारे सबको। Shanti Raju Bhai. Gracias. मधुबन में सबको याद देना। ओम शांति। लता बहन को मिला देते। Now do service with your elevated state of the mind and your subtle attitude. Create vibrations and an atmosphere through your spiritual attitude. Just as the atmosphere of Madhuban is imprinted on each one's heart, in the same way, each one of you must create such vibrations and such an atmosphere through your spiritual attitude. However, your attitude can only be spiritual and powerful when you do not have any vibrations of a wrong attitude towards anyone. The attitude of your mind has to be clean. If your attitude is negative, or you have rubbish in your mind, you will not be able to serve with a pure attitude. अब अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा
सूक्ष्म वृत्तियों से सेवा करो। श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाना। जैसे मधुबन का वायुमंडल हरेक के दिल में छप जाता है, ऐसे हरेक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होंगी जब अपने दिल में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति स्वच्छ चाहिए। अगर वृत्ति नेगेटिव है, मन में किचड़ा है, तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। ओम शांति।